Hello students, welcome to Your Better Education. I am Jitendra Tyagi and all of you know that we have launched one book that is from NPTEL assignments. We have compiled different questions from different NPTEL assignments which are relevant for your GATE exam branch wise, okay. And we have such books for mechanical engineering, civil engineering, computer science and for other branches also, for electronics and communication, for electrical, okay. For all branches we have launched this book, you can see, and you can prepare for your GATE 2023 exam with the help of this book. It contains questions from both technical section as well as engineering mathematics section, okay. So now in this video what I am going to do, I am going to solve one important question that is from NPTEL assignment, and such question have been asked in GATE exam also many times. So you can understand the relation between NPTEL assignment questions and GATE exam questions, okay. So highly chance of same concept being overlap in both the exams, okay. So that is from complex theory. This question is from complex theory. Okay, this one is the question from complex numbers. All the values of I to the power 3i are, okay, and we have four options: purely imaginary, purely real, complex, purely real with negative real part. Okay, so which one is the right answer to this question and what is the concept involved, that we are going to discuss, okay. So you can think about the solution of this problem yourself. Okay, all the values of this. So let us solve this problem now. Before solving this question, what you have to remember about logarithm of complex numbers, okay. Logarithm of a complex number is actually a multi-valued function, okay. We have two types of functions: single valued functions and multi-valued functions. So generally logarithm of complex numbers is a multi-valued function. It means for a single complex number there may be infinite number of values of logarithm of that complex number, okay. कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका जो लोगरिथम हम कंप्यूट करते हैं, ठीक है, वो इन जनरल मल्टी वैल्यूड है, मीन्स बहुत सारी वैल्यूज की होती हैं, ठीक है. अब उसमें एक वैल्यू, वन पार्टिकुलर वैल्यू, we call that as principal logarithm, okay. Many times we use only principal logarithm, but in some questions we may require the knowledge of the general logarithm, okay. So what is the relationship between general logarithm and principal logarithm of a complex number? In simple words we can write general logarithm, okay, general logarithm of a complex number z is equal to its principal logarithm of that complex number z of plus 2k pi I, where k is any integer, okay, where k is an integer, where k is an integer, okay. So this is the relationship: general logarithm is equal to principal logarithm of z plus 2k pi I. By choosing different values of k, we can get different values of general logarithm. So due to this term, this is a multi-valued function, okay. For different k we will get different values. Suppose we keep k equal to 0. Now if we put k equal to 0, then general logarithm is equal to principal logarithm. So principal logarithm is value of general logarithm when this k is equal to 0. If we take k equal to 1, it will be 2 pi I. So principal plus 2 pi I, okay, that will be the general logarithm. Now what is this principal logarithm of a complex number? So let us write this also.
principal logarithm of z. Okay, we can say principal logarithm of a complex number z. So I am writing that as ln z. Okay, ln z equal to ln modulus of z. Okay, this is the purely real number, actually purely real logarithm which we generally use. Okay, whenever we deal with real numbers, only real functions, we use this. Okay, जो हमारे कैलकुलेटर में भी हम कैलकुलेशंस करते हैं रियल नंबर्स के लोगरिथम की, दैट इज दिस टर्म ln modulus of z. mod z इज ए प्योरली रियल नंबर. ओके, सो इसका जो लोगरिथम हम कंप्यूट करते हैं कैलकुलेटर से, ये वाली टर्म हमारी, ठीक है ना, और प्लस I multiplied by theta, where theta is the principal argument of this complex number z. Okay, ये जो थीटा है ये क्या है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z. तो ये हमारे इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है. जनरल लॉगरिथम का रिलेशन क्या है, एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल लॉगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z. इट इज इक्वल टू ln ऑफ mod z. दिस इज अ रियल पार्ट, रियल नंबर एक्चुअली, प्लस I इनटू दिस थीटा. थीटा इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z. You can write here theta is the principal argument of the complex number z. Okay, now let us come to this problem. Okay, particular problem. Concept involved जो यहाँ पे use होगा, that I have explained you here. So how we solve such problems in GATE exam? There was one question where we got I to the power I. Okay, here we have I to the power 3i. So you may have I to the power minus I. Okay, so any two complex numbers may be there. So you assume a equal to, you take it as a, suppose this is a equal to I to the power 3i. Now taking logarithm, okay, so ln of a, taking logarithm ln of a, it equal to ln of I to the power 3i, and equal to, using the property of logarithm, it is 3i multiplied by ln I. Okay, so logarithm of a, okay, a is equal to I to the power 3i, and if we take logarithm of a, it is equal to ln of this, using the property of logarithm, it is 3i into ln I. Okay, now since we want all possible values of this, so all possible values of a, okay, for that we must use all possible values of this ln I. So it means we must use the general logarithm of I here. Okay, so this is now general logarithm, this is general logarithm of this complex number I. So this ln a is equal to, ln a equal to 3i multiplied by, now what is this general logarithm of this I? How we can write? Using this formula, principal logarithm और प्लस 2k pi I. ओके, सो प्रिंसिपल लोगरिथम क्या होगा I का, वो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, log ऑफ mod z. mod ऑफ I कितना होता है 1. ओके, तो ये log 1 कितना हो जाएगा 0, और I का आर्ग्यूमेंट क्या होता है पाई बाई 2. ठीक है, तो ये I पाई बाई 2, सो 0 प्लस I पाई बाई 2, ये तो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 0 प्लस I पाई बाई 2. दिस इज द प्रिंसिपल लोगरिथम, और प्लस 2k पाई I. यहां पे लिखेंगे ln a इक्वल टू 3i इंटू 0 प्लस I पाई बाई 2 प्लस 2k पाई I. ठीक है, ये आ जाएगा. अब देखो ये I यहां पे कॉमन है, दोनों में I कॉमन है, I कॉमन बाहर लेंगे, सो इक्वल टू I स्क्वायर का मतलब -1, सो -3. ठीक है, इंटू पाई बाई 2 और प्लस 2k पाई. सो ये ln a इक्वल टू है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा e टू द पावर -3 इंटू दिस टर्म पाई बाई 2 प्लस 2k पाई. सो a इक्वल टू ये आ रहा है. अब k की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो हम a की डिफरेंट वैल्यूज हमें मिलेंगी. ओके, सो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a वी कैन सी दैट e टू द पावर रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज नेवर नेगेटिव, इट इज नेवर जीरो. ओके, एंड इट इज रियल. भाई e की पावर में अगर रियल नंबर है, ठीक है, चाहे वो माइनस में हो, यहां पे -3, तो ये हमेशा क्या रहेगा आपका नॉन नेगेटिव और नॉन जीरो, इट मींस ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, अब ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो क्या ऑप्शन बोल सकते हैं इसके बारे में हम, प्योरली इमेजिनरी तो नहीं होंगी, एक ही वैल्यूज इमेजिनरी तो नहीं आ रही हैं. ठीक है, तो ये तो गलत हो गया. कॉम्प्लेक्स भी नहीं कह सकते हम इसमें, ठीक है ना. प्योरली रियल विद नेगेटिव रियल पार्ट, अब ये भी गलत है क्योंकि ये पॉजिटिव है. ओके,
तो एक ही ऑप्शन मैच कर सकता है प्योरली रियल, बट रियल वैल्यूज है ना, सारी की सारी जो वैल्यूज आएंगी वो क्या है, प्योरली रियल है, ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का ऑप्शन नहीं है तो प्योरली रियल वो हम बोलेंगे। सो बी इज द राइट आंसर हियर, ओके, क्योंकि ये जो इसका पार्ट आएगा रियल पार्ट इसका ए का, वो क्या है आपका पॉजिटिव। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ आपको पता होगा, ई की पावर का अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, देखो ये ऐसे, तो ये हमेशा क्या रहता है आपका पॉजिटिव, कभी जीरो नहीं होगा, कभी निगेटिव नहीं होगा, ओके। सो दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द कंसेप्ट, and you have to remember this concept. In complex theory, in many branch we have complex theory in syllabus like mechanical engineering में electronics communication, electrical instrumentation, okay, बहुत सारी गेट की ब्रांचेस हैं जहां पे कॉम्प्लेक्स थ्योरी सिलेबस में होता है और इंपॉर्टेंट होता है, वहां से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो उसके अंदर ये जनरल लॉगरिथम, प्रिंसिपल लॉगरिथम का कंसेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट प्रिपेयर इट, ओके, यू मे गेट क्वेश्चंस इन एग्जाम, ओके। So now I hope you have understood this concept, and in the next video we will discuss some another different question from NPTEL assignments, okay. So keep watching, and please, if you are seriously preparing for your GATE exam, just try this. This is a very good option for good quality questions. All questions have been collected, all relevant questions have been collected, okay. All the best.